Hello dear students, I welcome you to my YouTube channel Mathematics Prime. Today in this lecture we are going to discuss finite set, the foremost topic of class 11th of set theory. Now in this lecture we are going to discuss finite set. As the name indicates, finite means which contains countable or definite number of elements. Though finite set can be defined as a set which contains finite number of elements, which contains countable number of elements, in which the first element and the last element is given. So that is known as finite set. For example, you can say that set of natural numbers less or equal to say 10. So we will represent this set as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 because the condition is given. We are writing the set of natural numbers which are less or equal to 10. That means 10 will be also included in the set, and all the natural numbers which are less than 10, they will be also included in the set. So we will write this set from 1 to 10. So this is the finite set because it contains the first element and the end element also. So this is known as finite set. Also you can represent say set of all humans on earth. जमीन पे कितने ह्यूमंस रहते हैं, that is also a finite set. So you may be thinking that humans are infinite in number. No, but it is possible by means of census. We are able to calculate the number of humans living on the earth, living in different parts of the world. So we can predict that, we can say the population of the world is like 2 billion or 3 billion whatsoever. So that is also possible by census. So this is a set of all humans living on the earth. That's also a finite set because we can although it may take much time in counting, but it is a finite set. So this finite set means which contains a finite number of elements. इसके बाद आपको इनफिनाइट सेट पढ़ना है. इनफिनाइट सेट क्या होता है? Infinite set, chunki finite set means which contains finite number of elements, and infinite set means which contains infinite number of elements. That means which is not finite. तो finite जो set नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं? Infinite. जो set finite नहीं होगा उसको बोलते हैं infinite. So what does it mean? It means that any set which has given the first element but not the end element, like we can say that set of all natural numbers, like this set of all natural numbers. So this set may be represented like 1, 2, 3, 4, 5, so on, continue in this pattern because we don't know that exact number of natural numbers. So we proceeded this set by dash dash in which the first element is given and end element it is not known. So this set is known as infinite set. This known as. इसी तरीके से आप different examples ले सकते हैं. Set of integers, set of real numbers, set of rationals, set of irrationals. So all these sets are infinite sets. So you can take different examples of infinite sets. So this is finite set, this is infinite set. Finite set जो है इसको आप इसमें जो है रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जबकि हर कोई इनफिनाइट सेट जो है आप इसको रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते because you will take the this example of set of real numbers, because in set of real number they don't follow the exact pattern, they don't follow the same pattern. So some real numbers having the decimal expansion terminating, and some having non-terminating repeating, and some having non-terminating non-repeating. So they don't follow the same pattern. So they may be not write in this roster form. All infinite sets. So all infinite sets cannot be expressed in
रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हर कोई इनफिनाइट सेट हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर इनडेफिनिट पैटर्न, उनका पैटर्न डेफिनिट नहीं होता है। तो ये था हमारा फाइनाइट और इनफिनाइट सेट। इसके बाद हम और एक चीज पढ़ने वाले हैं, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? दो सेट्स कब इक्वल कहलाएंगे? आपके पास दो सेट्स हैं P एंड Q, ये हम दो सेट्स लेंगे, these are two sets, and when these two sets can be known as equal sets, P will be written as equal to Q if P and Q are having exactly the same elements। यानी जो एलिमेंट्स किस में होंगे? P में होंगे, वही एलिमेंट अगर Q में भी होंगे। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए अगर ऑर्डर इनका डिफरेंट भी होगा एलिमेंट्स का, लेकिन जो एलिमेंट P में होंगे वही एलिमेंट Q में होंगे, तब दोनों एलिमेंट्स कहलाएंगे इक्वल सेट्स। लाइक आप लेंगे P सेट, इसमें आप लेंगे A B C D, और Q सेट, इसमें आप लेंगे B A D C। तो आप देख रहे हैं जो एलिमेंट P में है वही एलिमेंट Q में है, A B B C C and D D। So all the elements of P are also the elements of Q। So exactly P and Q have the same elements, therefore we will write P is equal to Q। So दोनों सेट्स इक्वल कहलाएंगे। अदरवाइज अगर इनमें डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे then P is not equal to Q। So we will write P is not equal to Q, and P and Q are known as unequal sets। So these are equal sets। इसके बाद आप और एक चीज पढ़ेंगे, that is equivalent sets। इक्विवेलेंट सेट्स तभी दो सेट्स को इक्विवेलेंट कहा जाता है जब उनमें एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा, यानी जितने एलिमेंट एक सेट में होंगे उतने ही एलिमेंट दूसरे सेट में होंगे। ठीक है, सो इफ two sets have same number of elements, अगर दो सेट्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तब दो सेट्स को हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। लाइक आपका सेट यहां पे मैं लेता हूं, सपोज R लेता हूं, इस सेट में है सपोज 1 2 3, और S लेता हूं दूसरा सेट, इसमें है सपोज A E I। तो इसमें तीन एलिमेंट है, उसमें भी तीन एलिमेंट है। हाँ, दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट है, बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P, सेट R इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S। So we will write implies NR, यानी number of elements in set R is equal to NS। So number of elements in set S, that is cardinality of the two sets is same। We will know this number of elements in a set that is known by the name cardinality। So cardinality of the two sets is same, it will imply R and S are equivalent। तो ये क्या है? equivalent sets है। These are equivalent sets। So equal sets जिनमें exact same elements होंगे, और equivalent sets जिनमें exactly same number of elements होंगे। हाँ, लेकिन ये जो equal sets है, equal sets equivalent कहला सकते हैं, लेकिन equivalent sets जरूरी नहीं है कि वो equal sets बने। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो R and S are equivalent sets, तो इक्वल नहीं हो सकते, जरूरी तो नहीं है, क्योंकि इनमें जो 1 2 3 है इसमें A E I है, यानी जो एलिमेंट इनमें है वो एलिमेंट उनमें नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स में। तो दोनों सेट्स कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट बट नॉट इक्वल सेट्स। बट इफ यू अगर आप P और Q पे नजर डालेंगे, P में A B C D है, Q में B A D C है, यानी जो एलिमेंट P में है वही एलिमेंट Q में है, बट exactly the same number of elements also lie in that two sets, that is इसमें भी चार एलिमेंट, इसमें भी चार एलिमेंट, तो दोनों सेट्स को इक्विवेलेंट भी कहलाएंगे। ठीक है, तो इक्वल सेट्स जो हैं इक्विवेलेंट कहलाएंगे, बट इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल, ये जरूरी नहीं है। तो these are two types of sets, यानी equal sets and equivalent sets। इसी तरीके से यहां पर आपको
एक्सरसाइज 1.2 पे ले चलता हूँ, एक्सरसाइज 1.2 ऑफ 11th मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया नल सेट होता है वॉइड सेट और एम्प्टी सेट विच कंटेन नो एलिमेंट। सो आपको बताना है एग्जांपल सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सो पहला जो है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय जो 2 से डिवाइड होंगे, तमाम ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो। आपको पता है 2 से कोई ऑड नेचुरल नंबर डिवाइड नहीं होता है। सो दिस सेट कंटेन्स नो एलिमेंट। सो दिस सेट कैन बी रिटन एज with two curly braces with no element between them. So this is a empty set, or this can be also written as phi set. So it is the best example for a phi set. Another is set of even prime numbers. Second thing, set of even prime numbers. Set of even prime numbers. This is the second part of the first question. Set of even prime numbers. You know that इवन प्राइम्स की जब हम बात करते हैं तो प्राइम्स में ओनली इवन प्राइम है, दैट इज 2, दैट इज 2। सो दिस इज द ओनली इवन प्राइम which is the even prime also, and smallest prime number, that is 2. So this is not equal to an empty set because it contains at least one element, that is 2. तो कम से कम इसमें एक एलिमेंट तो है ही, ठीक है। तो दैट इज वाई दिस इज नॉट ए फाइनाइट सेट, दिस इज नॉट ए दिस एम्प्टी सेट। इसी तरीके से आपका और एक एग्जांपल है एक्स द नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 5। तीसरा अगर आप देखेंगे x such that x is a natural number, comma x less than 5 and x greater than 7. This third part of this question. तो ये यहाँ पर आप देखिए इस सेट में तमाम वो नेचुरल नंबर आएंगे जो कि लेस देन 5 है, बट साथ ही साथ वो ग्रेटर देन 7 है। तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो ये कंडीशन दोनों सेट्स पे करेगा। व्हाट द कंडीशन, साथ ही साथ ये लेस देन 5 भी होना चाहिए और ग्रेटर देन 7 भी होना चाहिए। तो अगर आप लेस देन 5 लेंगे 4 बट इट शुड बी आल्सो ग्रेटर देन 7, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ये कंडीशन कोई भी नेचुरल नंबर सेट्स पे नहीं करेगा। सो दिस सेट विल कंटेन नो एलिमेंट, देयरफॉर इट इज an empty set. This is an empty set, so this will be represented by phi set. इसी तरीके से y such that y is a point common to any two parallel lines. चौथा पार्ट अगर आप देखेंगे, अगर आप दो पैरेलल लाइंस लेंगे, ये दो पैरेलल लाइंस है तो इनके बीच में कोई पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, बिकॉज तभी दो पॉइंट लाइंस के दरमियान एक पॉइंट कॉमन आएगा जब वो इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पे या इनफिनिट मेनी पॉइंट्स पे। तो इस केस में ये चीज आएगी और ये चीज भी आएगी जब दो lines क्या होंगी coincident. So in that case they have many points in common, and in that case there is one point in common, but in case of parallel line there is no point in common. So this is set up parallel line having any y is a point any two common to any two parallel lines. So we will write this set contains no element because there can be no point which is common to any two parallel lines. So this is also equal to phi set or empty set. So this is the question first of the exercise 1.2. इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है which of the following sets are finite and infinite. The first is set of months of a year. You know that there are 12 months in a year. You know that there are 12 months in a year, so this is possible to see that this set is a finite set. Why is finite set? Because there are only 12 months in a year. Second question की बात करते हैं तो पहला जो है finite set होगा because there are only 12 months. इसमें only 12 months है एक ईयर में, so this is possible. So therefore it is finite set. Second is 1 2 3. Second part अगर आप देखेंगे 1 2 3 so on dash. You know that there is first element given but end element is not known, so it is infinite set. This is infinite set. And third thing is 1 2 3 so on up to 100. Third part, this is 1 2 3 so on up to 100. You see that there is first element given and end element that is also given, so this is a finite set. As described also earlier, I said that this is a finite set. इसी तरीके से set of positive integer is greater than 100. You know that there are infinite integers which are greater than 100. This will be also an infinite set. And set of prime numbers less than 99. 99 से छोटे जितने भी prime numbers उनका set लेना है. This is possible. We can count them, and that is a
फाइनाइट सेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि तभी आप तक मतलब मेरी वीडियोस अच्छे से आप तक पहुंचेंगे और आप मैथ्स का लाभ अच्छे से उठाएंगे। और जहां पर भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत महसूस हो रही है, कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मिसकॉन्सेप्ट हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कहाँ पे किस तरीके से पढ़ाना है, या कहाँ पे आपको कहाँ पे मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो मैं वो आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, टिल देन बाय।